વર્ષોથી અનેક કાર્યક્રમોમાં અમે જઈએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ઇનામ વિતરણ આપવાના હોય, એમને નવાજવાના હોય, ત્યારે હું જ્યારે સાહેબ પૂછું મુખ્યમંત્રી શ્રી કે આપણા મમ્મી પપ્પા શું કરે છે, તો સાહેબ એ દીકરાના મમ્મી પપ્પા એ શિક્ષક હોય છે. આપણે કરેલું કામ એ ઈશ્વરના દરબારમાં ક્યાંય ને ક્યાંય લખાતું હોય છે. જેની પાસે કંઈ નથી એને કેળવણી આપવાનું ઉત્તમ કાર્ય એમાં સરકારી સ્કૂલોની અંદર આપ કરી રહ્યા છો. આપણી હાઈકોર્ટે પણ આપણા શિક્ષણને, આપણા શિક્ષણના કામને, શિક્ષકોના કામને એમને બિરદાવી છે, પ્રશંસા કરી છે. આટલું મોટું માળખું એમને સુપેરે રીતે સંકલિત કરવાનું, અશિક્ષિત સમાજ એમાંથી શિક્ષિત કરવાનું કામ આપ સૌ કરી રહ્યા છો. ત્યારે ગઈકાલે પણ મેં શિક્ષકના જે બાળકો હતા એમને પૂછ્યું તો કોઈ સીએ, કોઈ એન્જિનિયર, કોઈ ડોક્ટર એ ભણતા હતા અને કેટલાક ભણી ચૂક્યા હતા. એટલે આપણું જે કરીએ છીએ અંતિમ માણસ સુધી શિક્ષણ પહોંચાડવાનું કામ, એમના જીવન બદલાવવાનું કામ, એમનું પરિવર્તન લાવવાનું કામ, એ ઉત્તમ કાર્યના ભાગીદાર આપણે સૌ બન્યા છે. અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પણ આભાર માનું છું કે એ કાર્યમાં શિક્ષણ મંત્રી તરીકે મને પણ જોડ્યો છે. મને પણ એટલું જ ગૌરવ છે કે આ ઉત્તમ કાર્યના આપણે ભાગીદાર બન્યા છીએ. ત્યારે ઈશ્વર, ભગવાન, મા સરસ્વતી આપણે સૌને વધારે બળ પૂરું પાડે. અમારા માનનીય સાંસદ શ્રી પણ અહીંયા હાજર છે, ધારાસભ્યશ્રીઓ પણ હાજર છે, એચએસ અને રાકેશભાઈ સૌ અમારા પ્રતિનિધિ પણ છો. આપ સૌ શિક્ષક ભાઈઓ બહેનોને પુનઃ એકવાર જે પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે એમને વિશેષ અભિનંદન. અને નથી પ્રાપ્ત થયું એને આ હોલમાં મહામહિમ અને મુખ્યમંત્રીના હસ્તે એ આવતા વર્ષે પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારની કામગીરીમાં આપણે સૌ જોતરાઈએ. અને આવનારું ભવિષ્ય ગુજરાતના ભારતનું નરેન્દ્રભાઈ એક એવા સર્જક અને નિર્માતા આપણે મળ્યા છે. માની મુખ્યમંત્રી અને મહામહિમ એ પણ મળ્યા છે. પ્રાકૃતિક ખેતીનો પણ વિષય લઈને અનેક વિષયો, પ્રોફેશનલ વોકેશનલ કોર્સિસ સાથે આપણું શિક્ષણ અનેકવિધ નિર્ણયો એ લઈ ચૂક્યું છે. આગામી દિવસોમાં પણ લઈશું. સૌ સાથે મળીને આજના દિવસે સંકલ્પ કરીએ. હજી નથી પહોંચ્યા ત્યાં પહોંચવું છે, અને જ્યાં પહોંચ્યા છીએ એને વધારે પ્રબળ અને બળવત્તર બનાવવું છે. આજના દિવસે આ સંકલ્પ કરીને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામના આપું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. जय जय करवी गुजरात। सत्य न्याय की राह पर चलना शिक्षक हमें सिखाते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। આવી ઉદાત્ત ભાવનાને બિરદાવતા માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી આપ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હવે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ સમારોહ 2022નું આવો વિધિવત રીતે શુભારંભ કરીએ। ઓનરેબલ ગવર્નર ઓફ ગુજરાત શ્રીમાન આચાર્ય દેવવ્રતજી, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल, ऑल डिग्निटरीज कम फॉरवर्ड, आप सबने आगे आने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। હું વિનંતી કરું છું પ્રાથમિક વિભાગમાં 51,000ની રોકડ ધનરાશિ, શાલ અને તામ્રપત્ર એનાયત થઈ રહ્યું છે। આપણે પણ તાળીઓના ગર્જન સાથે શ્રી ભાવિશાબેન રામજીભાઈ લાખાણા, મોકર પ્રાથમિક શાળા, જિલ્લો પોરબંદર, જેઓએ પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, યોગાસન, ખેલ મહાકુંભ, નવોદય અને એનએમએમએસ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી દ્વારા તેમજ સાયન્સ ફેર, ઇનોવેશન ફેર, નેશનલ ફેર જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સતત સક્રિય રહીને શાળાને રાજ્ય અને નેશનલ કક્ષા સુધી સફળતાના શિખરે પહોંચાડેલ છે। શ્રી રવિન્દ્ર કુમાર જટાશંકર મહેતા, શ્રી જાબાળ પ્રાથમિક શાળા, જિલ્લો અમરેલી, જેઓએ મેરે દોસ્ત નવતર પ્રયોગ અને મારું મેગેઝિન મારું જ્ઞાન જેવા નવતર પ્રયોગને જિલ્લા ફેસ્ટિવલમાં સ્થાન મળેલ છે। એજ્યુકેશનના માધ્યમથી શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સન્માન 2019માં ચિત્રકૂટ એવોર્ડ, 2018માં સાંદીપની ગુરુ ગૌરવ એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત કરેલ છે। શ્રી વિજય મગનલાલ દલસાણિયા, શ્રી સભારવાડી પ્રાથમિક શાળા, જિલ્લો મોરબી, જેઓના રિશેષ પણ બને વિશેષ તથા ચલો સલાહ નહીં માધ્યમ આપીએ જેવા ઇનોવેશન રાજ્ય કક્ષાએ પસંદગી પામ્યા છે। ટોય ફેરમાં નેશનલ કક્ષાએ ફરતી પેન્સિલ રમકડું રજૂ કરીને શાળા, જિલ્લો અને રાજ્યનું ગૌરવ વધારેલ છે। શ્રી જાગૃતિબેન જનકરાય રાજ્યગુરુ, કન્યા શાળા નંબર 3, રાજુલા, જિલ્લો અમરેલી, ચિત્રકૂટ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ તથા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ મેળવેલ છે।
જીસીઈઆરટી હૈદરાબાદમાં 17 દિવસની કઠપૂતળીની તાલીમમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને નાટ્ય લેખનમાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો છે. શ્રી શિલ્પાબેન બાણજીભાઈ ડાભી, જિલ્લો રાજકોટ. શાળા કક્ષાએ 3 વર્ષથી સેટરડે સ્પેશિયલ અને લર્નિંગ બાય એક્ઝિબિશન પ્રોજેક્ટ દ્વારા તેઓએ બાળકોમાં જ્ઞાન અને જીવન ઉપયોગી કૌશલ્યોનો વિકાસ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. શ્રી લહેરીકાંત સેવજીભાઈ ગરવા, ત્રિનેત્રા પ્રાથમિક કુમાર શાળા, જિલ્લો કચ્છ, ભુજ. સ્થાનિક બાળકો પ્રાદેશિક ભાષામાં ભણે અને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે તે હેતુથી કચ્છી બોલી એપમાં સુંદર કામગીરી કરેલ છે. શ્રી દીપક જેઠાલાલ મોતા, શ્રી હુંગદાઈ વાડી વિસ્તાર, જિલ્લો કચ્છ. ઈ બાઇસિકલના અનૂઠા કોન્સેપ્ટ સાથે તાલુકા કક્ષાના ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં પ્રથમ વિજેતા ક્રમ પ્રાપ્ત કરેલ છે. શ્રી સંગીતાબેન ચિમનલાલ સોની, હીરાપુરા પ્રાથમિક શાળા, મુકામ પોસ્ટ હીરાપુર, જિલ્લો અરવલ્લી. આપશ્રીએ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરેલી છે. આપની કામગીરીની નોંધ લીધેલી છે. આપ સૌનો જોરદાર તાળીઓથી સત્કાર. શ્રી મેહુલ કુમાર મોહનભાઈ પ્રજાપતિ, દોલતપુરા પ્રાથમિક શાળા. આપ ફરજ બજાવો છો અને આપના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી આપના દ્વારા થયેલી છે. આપના માટે જોરદાર તાળીઓ. શ્રી રમીલાબેન દાનાભાઈ મકવાણા, શ્રી રમીલાબેન દાનાભાઈ મકવાણા મંચ પર આવ્યા છે. આપનો સત્કાર કરી રહ્યા છે સૌ મંચસ્થ મહાનુભાવો. ત્યારબાદ શ્રી રાજેશ કુમાર શિવાભાઈ પટેલ, નવાપુર પ્રાથમિક શાળા, મુકામ નવાપુરા, જિલ્લો આણંદ. શ્રી રાજેશ કુમાર શિવાભાઈ પટેલ તેઓ સન્માનને સ્વીકારી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓનો હર્ષનાદ. શ્રી દિગ્વિજયસિંહ પ્રભાતસિંહ ડાભી, શ્રી ડિંકવાડી પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો જિલ્લો બોટાદ ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. શ્રી ઋષાભાઈ ઓફણસિંહ વળવી, આપને વિનંતી છે મંચ પર આવવા માટે. શ્રી ઋષાભાઈ ઓફણસિંહ વળવી. ત્યારબાદ શ્રી સંજય કુમાર વિષ્ણુભાઈ પટેલ, આપને વિનંતી કરીએ છીએ મંચ પર આવવા માટે. શ્રી સંજય કુમાર વિષ્ણુભાઈ પટેલ મોટી મોરાલી વર્ગ પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવે છે. આપના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામ કર્યું છે. શ્રી હિતેશ કુમાર મંગળભાઈ પટેલ, દાંડી વર્ગ પ્રાથમિક શાળા, ખરોદા, તાલુકો જિલ્લો દાહોદ. આપ આ સન્માનને મેળવવા માટે મંચ પર આવ્યા છો. આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી નીતિન કુમાર મહેન્દ્ર કુમાર પાઠક, આપને પણ આ સન્માન મેળવવા માટે અમે આમંત્રિત કરીએ છીએ. શ્રી રસિક કુમાર બગુભાઈ પટેલ, પ્રાથમિક ઉચ્ચતર પ્રાથમિક શાળા બિલિયાંબામાં ફરજ બજાવો છો, જિલ્લો ડાંગ. આપના ક્ષેત્રની સુવાસ બહોળી થઈ છે. આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી પ્રદીપ કુમાર રમણભાઈ ચૌધરી, પ્રાથમિક શાળા ચીમકુવા, આપને વિનંતી છે મંચ પર આવવા માટે. પ્રદીપ કુમાર રમણભાઈ ચૌધરી આ સન્માનને મેળવી રહ્યા છે. શ્રી નરેન્દ્રકુમાર નગીનભાઈ પટેલ, સરસવણી પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો પાદરા, જિલ્લો વડોદરામાં ફરજ બજાવો છો. શ્રી મહેન્દ્રશ્રી નાથુસિંહ પરમાર, નવી નગરી પ્રાથમિક શાળા, માલનપાડા, ધરમપુર ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. મહેન્દ્રસિંહ નાથુસિંહ પરમાર, આપના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી રાજેશભાઈ મનસુખલાલ રાજ્યગુરુ, શ્રી એમ જે પટેલ હાઈસ્કૂલ, જિલ્લો ભાવનગરમાં આપ ફરજ બજાવો છો. આ માધ્યમિક શિક્ષકો છે, એમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી રાહુલ કુમાર નવનીતરાય ઉપાધ્યાય, શ્રી સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર, ગીર સોમનાથમાં આ ફરજ બજાવો છો. આમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી રૂપેશ ધનંજય ભાટિયા, શ્રી અભિનવ હાઈસ્કૂલ, સિદ્ધપુર, જિલ્લો પાટણ ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. શ્રી સુરેશભાઈ બાબુભાઈ ધોરિયા, સીડી કપાસી હાઈસ્કૂલ, સ્ટેશન રોડ, સુરેન્દ્રનગર ખાતે ફરજ બજાવો છો. આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ. ડોક્ટર વિનોદ કુમાર બાબુરામ પાંડે, આપને વિનંતી છે મંચ તરફ આવવા માટે.
શ્રી એમ.એચ. વિદ્યામંદિર ડભોડા ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાવો છો. ડોક્ટર વિનોદ કુમાર માટે જોરદાર હર્ષનાદ. શ્રી મહેન્દ્રકુમાર મગનભાઈ પ્રજાપતિ એબી હાઈસ્કૂલ રામોલ જિલ્લો ખેડા ખાતે ફરજ બજાવો છો. ત્યારબાદ શ્રી ગૌરાંગ કુમાર દિનેશભાઈ પટેલ અરવિંદ વિદ્યામંદિર જણોર ભરૂચ ખાતે ફરજ બજાવો છો. ગૌરાંગ કુમાર માટે જોરદાર હર્ષનાદ થઈ જાય. શ્રી ધનસુખભાઈ નારાયણદાસ ટંડેલ આપ વલસાડ ખાતે ફરજ બજાવો છો. આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. અને હવે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષકો આપના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામ કરી રહ્યા છો. શ્રી સ્વાતિબેન ધરમસિંહભાઈ છત્રોલા આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. જીએમ પટેલ કન્યા વિદ્યાલય ધ્રોલ ખાતે જિલ્લો જામનગરમાં આપ કામ કરી રહ્યા છો. ડોક્ટર મનીષ કુમાર રમણલાલ પંડ્યા જૈનાચાર્ય આનંદ ધનશુરી વિદ્યાલય સાબરકાંઠામાં ફરજ બજાવો છો. ડોક્ટર મનીષ કુમાર પધાર્યા છે, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી ગાયત્રીબેન શંકરભાઈ પટેલ એચ સિરોલાવાલા હાઈસ્કૂલમાં આપ છોટા ઉદેપુરમાં કામ કરી રહ્યા છો. ગાયત્રીબેન માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી અરુણાબેન મનુભાઈ માલાણી એમ.વી. પટેલ કન્યા વિદ્યાલય અમરેલી ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. આપના માટે પણ અમો હર્ષની લાગણી અનુભવી રહ્યા છીએ. શ્રી વર્ષાબેન વસંતલાલ જોશી સ્વામિનારાયણ કન્યા વિદ્યાલય ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા કચ્છ ભુજ ખાતે આપ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી રહ્યા છો. વર્ષાબેન માટે પણ હર્ષનાદ થઈ જાય. શ્રી સુરેશભાઈ અમૃતભાઈ સુંઢિયા પ્રકાશ વિદ્યાલય અને શ્રી સી.એસ. પટેલ સિદ્ધપુરા ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં આપ પાટણ ખાતે ફરજ બજાવો છો. આપના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ. શ્રી મનુભાઈ રામભાઈ પ્રજાપતિ પી.આર. ઠક્કર વિદ્યાવિહાર મગોડી ગાંધીનગર ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. મનુભાઈ માટે પણ જોરદાર તાળીઓ. ડોક્ટર અનિશાબેન મહેન્દ્રસિંહ મહિડા સરવી ડીટી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ વનિતા વિશ્રામ સુરત ખાતે આપ ફરજ બજાવો છો. આપના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી થઈ રહી છે, એમના માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શ્રી ધ્રુવકુમાર પ્રફુલ્લચંદ્ર દેસાઈ બોળાવદર પ્રાથમિક શાળા ભાવનગર ખાતે આપ કામ કરી રહ્યા છો. શ્રી ધ્રુવકુમાર આપ પધાર્યા છો, આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શ્રી કમલેશ કુમાર મોહનલાલ ઠક્કર ઉત્તમપુરા ડાંગિયા પ્રાથમિક શાળામાં તાલુકો દાંતીવાડા જિલ્લો બનાસકાંઠા ક્ષેત્રમાં આપ આપની સુવાસ ફેલાવી રહ્યા છો. શ્રી ચિરાગ કુમાર પ્રવીણભાઈ જોશી થલતેજ પ્રાથમિક શાળા નંબર 2 અમદાવાદમાં આપ આપનું ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપી રહ્યા છો. મુખ્ય શિક્ષક તરીકે કામ કરી રહ્યા છો. શ્રી નિલેશ કુમાર નટવરલાલ પંડ્યા કમ ફોરવર્ડ, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનો મત વિસ્તાર છે ને આપ આ એવોર્ડને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છો. તાળીઓમાં સહેજ પણ કચાશ ન રહી જાય. અને હવે દિવ્યાંગ બાળકો ક્ષેત્રે જેઓ ઉત્કૃષ્ટ કામ કરી રહ્યા છે એવા શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ઝવેરચંદ જગડ રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ જુનાગઢ વંથલી જુનાગઢ ક્ષેત્રમાં આપ દિવ્યાંગ બાળકો માટે ખૂબ ઉમદું કામ કરી રહ્યા છો. આ ખાસ શિક્ષક માટે તાળીઓમાં સહેજ પણ કચાશ ન રહી જાય. શ્રી કિરતસિંહ વાઘુભા ઝાલા આપને વિનંતી કરીએ છીએ મંચ પર આવવા માટે. શ્રી નવચેતન અંધજન મંડળ માધાપર જિલ્લો કચ્છ આપ આ બાળકો પ્રત્યે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી રહ્યા છો. અને શિક્ષકોની શૃંખલામાં અંતે શ્રી હિરેનકુમાર જયંતિલાલ ગોહેલ ગાંધી સ્પેશિયલ બહેરા મુંગા વિદ્યાલય ગોધરા ખાતે જિલ્લો પંચમહાલમાં કામગીરી કરી રહ્યા છો. હવે સ્કૂલિંગમાંથી લર્નિંગનો ગોલ સિદ્ધ કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવનાર પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓનું પણ સન્માન કરીશું. આ વિદ્યાર્થીઓને પણ સ્ટેજ પર આવવા આમંત્રણ છે.
પ્રથમ યુવરાજ સુરેશભાઈ પટેલ, ગલોડિયા પ્રાથમિક શાળા, ખેડ બ્રહ્મા, જિલ્લો સાબરકાંઠા. અંજલિ લક્ષ્મીકાંત મુંગળા, રીકડિયા પ્રાથમિક શાળા, અમરેલી, જિલ્લો અમરેલી. સત્યજીતસિંહ રણજીતસિંહ ગોહિલ, બડલી પ્રાથમિક શાળા, શિહોર, ભાવનગર જિલ્લો. આયુષી રોશનભાઈ ચૌધરી, પ્રાથમિક શાળા પાઠકવાડી, ડોલવણ, જિલ્લો તાપી. માનવ ડાયાભાઈ પરમાર, સયાજીગંજ શાળા નંબર 52, વડોદરા કોર્પોરેશન. કૃષ્ણા ઘનશ્યામભાઈ ભાડજા, મેરુપાર પે સેન્ટર શાળા, હળવદ, મોરબી જિલ્લો. આ હતા પ્રતિભાવંત બાળકો. ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે આ નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે ત્યારથી પ્રતિભાવંત બાળકોની સંખ્યામાં ઉત્તર વધારો થયો છે. આ બાળકો આપણું ભવિષ્ય છે, ગુજરાત અને ભારતનું ભવિષ્ય છે. અને હવે મંચસ્થ મહાનુભાવોને આપણી બેઠક વ્યવસ્થામાં સ્થાન લેવા અમે વિવેકપૂર્ણ વિનંતી કરીએ છીએ. પુનઃ તાળીઓના ગર્જન સાથે મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ. अक्षर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, साक्षर हमें बनाते, जीवन क्या है हमें समझाते, जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व ही सच्चे शिक्षक कहलाते हैं. स्वभावे मृदु परंतु निर्णयમાં મક્કમ છે આપણા મુખ્યમંત્રી. પરિણામલક્ષી કાર્યો કરવામાં કૃત સંકલ્પ છે આપણા મુખ્યમંત્રી. તો આવો નિરામય ગુજરાતના પ્રણેતા, ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યપ્રધાન શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ માટે જોરદાર તાળીઓ એમના પ્રસંગોચિત પ્રવચન માટે. રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષક દિવસ નિમિત્તે આયોજિત રાજ્યના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક વિતરણ સમારોહમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સન્માનીય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, અમારા મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર, અહીં ઉપસ્થિત ધારાસભ્ય શ્રી રાકેશભાઈ, સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન સુજયભાઈ મહેતા, એચ.એસ. પટેલ, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી, અગ્ર સચિવ શ્રી શિક્ષણ વિભાગ શ્રી એસ.જે. હૈદર, સચિવ શ્રી વિનોદ રાવજી, એવોર્ડ વિજેતા શિક્ષક મિત્રો, ઉપસ્થિત આદરણીય અધિકારીગણ, માં સરસ્વતીના ઉપાસક સૌ શિક્ષક ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. શાંતિ થઈ ગઈ એકદમ. કારણ કે એમાં શું છે કે તમારે નાના છોકરાઓ જોડે કામ લેવાનું, એટલે શાંતિમાં તમને મજા ના આવે એમ. થોડો થોડો અવાજ હોય તો ઠીક રહે એમ. અને આમ તો રોજે રોજ તમારે બધાને શીખવાડવાનું. અમે અહીંયાથી કંઈ શીખવાડવા નથી આવ્યા. આજે તો આપણી પાસે પણ શિક્ષક છે, હેડમાસ્ટર જેને કહી શકાય એવા આપણી પાસે શિક્ષક છે, રાજ્યના હેડમાસ્ટર છે, એટલે અમારે એમની પાસેથી શીખવાનું છે. અને શિક્ષા એવી વસ્તુ છે કે આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી શીખાય એવું છે. આપણી તૈયારી હોવી જોઈએ. આમ તો આજનો દિવસ એટલે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપકી ગોવિંદીઓ બતાય. એટલે જેની તાકાત આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જો ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય તો ગુરુજનની જરૂર પડે એવું છે.
અને ગુરુજન વગર ભગવાને કોઈ દેખાડી શકે એમ નથી. એટલે જે આપનું સ્થાન છે એ સ્થાન કદાચ આપણી આર્ય સંસ્કૃતિમાં ગોવિંદ સમક્ષ મૂક્યું છે, સમકક્ષ મૂક્યું છે, એનાથી કદાચ ક્યાંય નીચું નથી. તો આપણી પણ જવાબદારી છે અને જવાબદારી નિભાઈ રહ્યા છે, સારી રીતે નિભાઈ રહ્યા છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ શિક્ષણમાં જે મજબૂત પાયો નાખ્યો, મજબૂત પાયાના પરિણામે આજે શિક્ષણ ક્ષેત્રે, હું સ્કૂલ બોર્ડમાં જ્યારે વાઇસ ચેરમેન હતો ત્યારથી કદાચ ઘણા બધાએ આની અંદર ઘણા બધાની સાથે મેં કામ કર્યું છે. તો એક પણ દિવસ અત્યારે વ્યવસ્થા એટલી સરસ છે કે વિદ્યાર્થી જો એક દિવસ ગેરહાજર રહ્યો તો શિક્ષક એના ઘરે પહોંચી જાય છે. આ વ્યવસ્થા અત્યારે ઊભી થઈ છે અને એના કારણે આજે જે હું મજબૂત પાયો શિક્ષણમાં કહું છું એને નખાવવાનું કારણ શું? તો કે ભાઈ આજે જે છોકરાઓનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 2 દાયકા પહેલા લગભગ 37% હતો, એ આજે નહીવત 2% થી 3% વચ્ચે થઈ ગયો છે. અને 100% નામાંકન કરવાનું, અને આ નામાંકનના આધારે આજે શિક્ષણ પ્રત્યેની રુચિ દરેકની વધી છે અને દરેકે દરેક સમસ્યાનું સમાધાન જ શિક્ષણ છે. એ આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યાં શિક્ષણ વધારે છે ત્યાં કોઈ સમસ્યા નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી અણસમજણના હિસાબે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. એટલે દરેકે દરેક સમાજ, નાનામાં નાનો માણસ, અને એ બધાને જો આપણે મુખ્ય પ્રવાહમાં સાથે લાવવા હશે તો શિક્ષણની ખૂબ જરૂર, અને એ જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાત સરકાર પણ આપણને કોઈ તકલીફ ના પડે, આજે તો બધા શિક્ષકો જ અહીંયા બેઠા છીએ એટલે શિક્ષકોને કોઈ તકલીફ ના પડે એ પ્રમાણેના અભિગમ સાથે આગળ વધી. આજે અહીંયા તો આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને આજીવન શિક્ષક એવા આદરણીય ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણના જન્મદિને આજનો આ દિવસ ઉજવાતો હોય છે. એમને યાદ કરીને આ જીવન શિક્ષક એટલે જે શિક્ષક બન્યું, આમ તો કહેવાય છે ને આપણે એક વખત તરતા શીખી ગયા હોય ને પછી તમારે ડૂબવું બહુ મુશ્કેલ પડે, એમ એક વખત શિક્ષક થઈ ગયા એટલે પછી આ જીવન શિક્ષક, તમે ગમે તે ફિલ્ડમાં જાઓ તો તમારો શિક્ષક એટલે ગુરુજનનો જે ભાવ છે એ ક્યાંય ઓછો ના થાય. અને એ ગુરુજનના ભાવના કારણે જ આજે વિદ્યાર્થીઓ તમારી જે નિષ્ઠા અને નિષ્ઠાનું પરિણામ પણ આજે જોઈ રહ્યા છે. કે હમણાં અહીંયાથી કહેતા હતા કે ભાઈ આપણે શાળા પ્રવેશોત્સવ, અને શાળા પ્રવેશોત્સવમાં લગભગ આ વખતે 5900 જેટલા, અમદાવાદની જ ખાલી વાત છે, 5900 જેટલા છોકરાઓ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ છોડીને સરકારી સ્કૂલમાં આવ્યા. અને આ બધા રિઝલ્ટ, અને છેલ્લા કદાચ અત્યારે કોવિડ પછીની પરિસ્થિતિની વાત નથી, એના પહેલા પણ લગભગ 60,000 જેટલા છોકરાઓ આ પ્રાઇવેટ છોડીને સરકારી શાળામાં આવ્યા છે. અને આજે ખૂબ સારી રીતે જ્યારે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ કહે કે ભાઈ કંકરમાંથી શંકર બનાવી શકે એ તાકાત આપણી વચ્ચે છે, આપની પદે કંકરમાંથી શંકર બનાવી શકે એ શિક્ષકની તાકાત છે. અને એ તાકાત હોય ત્યારે અમારે પણ જે પણ રાજ્યને પણ આગળ વધવું હશે તો શિક્ષણનો પાયો વધારે ને વધારે મજબૂત, અને અત્યારે તો સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ અને ડિજિટલના માધ્યમથી પણ આપણે શિક્ષણ આપી રહ્યા. એક ગુજરાત રાજ્ય જ એવું છે
કે જેની અંદર પ્રાથમિક સ્કૂલોનું મૂલ્યાંકન થઈ રહ્યું છે ગુજરાત રાજ્યમાં. અને આ માર્ગદર્શન જે આપણા માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ટેકનોલોજી આધારિત મોનિટરિંગ અને ડિજિટલ શિક્ષણની નવી દિશા આપનારાનું જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શરૂ કર્યું છે એની અંદર ખરેખર ખૂબ સારું મોનિટરિંગ દરેકનું થાય છે. એમ એવું નથી કે ભાઈ એકલા વિદ્યાર્થીઓનું, શિક્ષકોનું થઈ શકે એવું છે. પણ શિક્ષકો, હું તો જ્યાં સુધી મારો અનુભવ છે ત્યાં સુધી મને આમ ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ આ છોકરાઓને શીખવાડવામાં આવતું હોય તો પેલું આપણી શું કહે છે કે તમારે કલા કરીને બતાવવાનું હોય તો એ વખતે કદાચ બહેનો તો સારી રીતે કરી શકે પણ ભાઈઓ કેવી રીતે કરી શકે. તો એ વખતે મેં જ્યારે સ્કૂલ બોર્ડમાં હતો ત્યારે મને એક શિક્ષકે બતાડ્યું કે અમે એટલું ઇઝીલી કરી શકીએ આરામથી. અને એમણે બતાડ્યું કે ભાઈ આ ગીત ગાઈએ અમે અને સામે, એટલે આમ આપણને આશ્ચર્ય, મને તો ખરેખર આશ્ચર્ય થયું કે ખરેખર એટલું સહજતાથી એમણે કરી બતાવ્યું હતું કે મને ખૂબ આનંદ થયો કે ભાઈ આજે શિક્ષક એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ. એના માટેનું માન દરેકને હોવું જ જોઈએ. જેને શિક્ષક પ્રત્યેનું માન ના હોય એને આગળ વધવું બહુ મુશ્કેલ પડે, બહુ મુશ્કેલ. શિક્ષક આજે તો આપણો દેશ જ્યારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાંથી આગળ વધીને અમૃતકાળમાં પ્રવેશી રહ્યો ત્યારે આપણને માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આ વખતે જ્યારે અમૃતકાળમાં આપણે પ્રવેશી રહ્યા છે ત્યારે 5 સંકલ્પો આપ્યા છે. એ 5 સંકલ્પો એટલે એમાં વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું, વિરાસતો પર ગર્વ કરવો, ગુલામીની માનસિકતાનો જડમૂળથી નાશ કરવો અને એકતા વધારવી અને નાગરિક ધર્મનું પાલન કરવું. આ 5 સંકલ્પોને સાકાર કરવા માટે એક શિક્ષક જ આવનારી પેઢીને તૈયાર કરી શકે. એટલે આપનું દાયિત્વ જે હતું એના કરતાં એ વધારે વધી રહ્યું છે. અને મને પાક્કો વિશ્વાસ છે કે આપણા શિક્ષકો આ પ્રમાણેનું કામ કરી જ રહ્યા છે અને વધારે સારી રીતે કરી શકે. અને આજે જેને પણ એવોર્ડ મળ્યા છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને અહીંયા આવેલા દરેક શિક્ષક કે જેણે એની અંદર ભાગ લીધો હોય એ બધાને અભિનંદન પાઠવું છું. અને દરેક શિક્ષક આ જ લેવલે પહોંચશે એ જ વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ ખૂબ આભાર. સાચા જ અર્થમાં શિક્ષણ વિભાગ ઉત્તમથી સર્વોત્તમ સુધીની સફર તય કરવા માટે અથાગ પરિશ્રમ કરી રહ્યું છે. શિક્ષણ વિભાગ અને ગુજરાતનું શિક્ષણ હબ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ટીમ ગુજરાતના સંવાહક થઈ શિક્ષણની નવચેતનાને નવતર અભિગમ દ્વારા વિકસાવવા અને સમાજના ઐક્યનું સ્થાપના કરતું આપનું પ્રેરક પ્રવચન અમારા સૌના માટે प्रेरणारूप रहसे. आपनो खूब खूब धन्यवाद. जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप. कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा में जिनका प्रेम अनन्य है, भारतीय संस्कृति में जिनका लगाव हृदय से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक कृषि और मूल्यलक्षी शिक्षण में उनकी संवेदना रही है, ऐसे राज्य के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी आप श्री को श्रेष्ठ शिक्षक पारितोषिक वितरण समारोह के अवसर पर प्रासंगिक प्रवचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ. सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री. ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति शांति शांति. गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित श्रेष्ठ शिक्षक राज्य पारितोषिक समारोह में उपस्थित
प्रदेश के बहुत ही मृदु एवं सौम्य लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के युवा और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी शिक्षा मंत्री श्री जीतू भाई वाघाणी जी, प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री कीर्ति सिंह वाघेला जी, मेयर अहमदाबाद माननीय किरीट भाई परमार जी, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग आदरणीय श्री S.J. हैदर जी, सचिव शिक्षा विभाग माननीय डॉक्टर विनोद राव जी, आज के इस शिक्षक समारोह में जिन हमारे आदरणीय शिक्षक भाई और बहनों ने सम्मान प्राप्त किया है, ऐसे सभी आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षाविद, अधिकारीगण और मेरे बहुत हार्दिक स्नेह के पात्र शिक्षक भाई और बहनों, सर्वप्रथम शिक्षक दिवस पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं। इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं कि मैं विशुद्ध आपके परिवार का सदस्य हूं। 35 वर्ष तक मैं कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य रहा। उस एक ही गुरुकुल में 35 वर्ष काम करते हुए आप जैसे शिक्षक बंधुओं के साथ हमने मिलकर एक अभियान चलाया। क्या आज के इस युग में हम शिक्षक परिश्रम करके आने वाली पीढ़ी और लोगों के मन में एक विश्वास पैदा कर सकते हैं कि वो हमारे मिशन से प्रभावित होकर अपने बच्चों को अधिक से अधिक हमारे साथ जोड़ें? एक प्रैक्टिकल चर्चा आपके बीच में मैं करने चला हूं और आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। प्रदेश के शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बताया कि पिछले 6.5 साल में लगभग 3.5 लाख बालक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो उनको छोड़कर और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में उन्होंने प्रवेश लिया है। तो इससे सिद्ध होता है कि आप सब ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने व्यक्तित्व से अभिभावकों के दिलों को जीता है और एक बहुत बड़ा काम आपने किया है, क्योंकि इस समय लोगों का राजकीय व्यवस्थाओं से मोहसा भंग हो रहा था और आपने उस धारा को उल्टा मोड़ने में सफलता प्राप्त की है। यदि इस दिशा में हम और मेहनत करें तो बहुत काम हो सकता है। इसी घटना की मैं आपको घटना बता रहा हूं। जिस गुरुकुल कुरुक्षेत्र में मुझे प्रधानाचार्य बनाया गया, उस समय मेरी आयु 21 वर्ष की थी और 21 वर्ष की आयु में इसलिए मेरे को प्रधान आचार्य नहीं बनाया गया कि मैं बहुत योग्य था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मैं बहुत योग्य था। वहां प्रधानाचार्य बनने का मौका इसलिए मिला कि वहां कोई पढ़ने नहीं आता था। समझ में आई बात? वहां कोई पढ़ने ही नहीं आता था जिस गुरुकुल में मुझे सौंपा गया। और जो पढ़ने भी आता था तो कौन आता था? मुख्यमंत्री जी
जिन बालकों से पड़ोसी भी दुखी थे वो मेरे पास भेजे जाते थे और ये कहते थे बिगड़ा है, आवारा है, माँ बाप का कहा नहीं मानता, पड़ोसी बच्चों की पिटाई करता है, इसे गुरुकुल में भेज दो, वो आचार्य जी ठीक करेंगे। तो ये मेरी पहचान थी। और वहां कितने बालक थे उस गुरुकुल में? गुरुकुल का मतलब आवासीय शिक्षण संस्था थी, लेकिन वहां सारे मिलाकर 60-70 बालक थे, वो भी आवारा बिगड़े हुए। और मैं उनके साथ मेहनत करता, वो ठीक ठाक हो जाते, माता पिता आते, वो उसको भी ले जाते। मैं कहता भाई इसे ले क्यों जा रहे हो? कि जी अब तो ये ठीक हो गया, अब यहां क्या करेगा। ऐसी परिस्थिति में, और आपको आश्चर्य होगा, अब वहां कोई सरकारी अनुदान नहीं, कोई सरकार टीचर्स को तनख्वाह देती नहीं, वही बच्चे, और वो भी बेहद गरीब परिवारों के बच्चे बेचारे, उनके माता पिता उनके भोजन तक का पैसा नहीं जुटा पाते थे। इसलिए मैं क्या करता था, दिन में उनको पढ़ाता था, रात को झोली लेकर के गांव-गांव में भिक्षावृत्ति करता था और गेहूं के समय पर गेहूं मांगता और धान चावल के समय पे धान इकट्ठी करता। वो उनके भोजन की व्यवस्था थी और बाकी मैं पढ़ाता था। आपको मैं ये घटना जो बताने लगा हूं, निश्चित रूप से एक मिशन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आज सुना रहा हूं। इन विपरीत परिस्थितियों सरकार का कोई सहयोग अनुदान नहीं, कोई अच्छे संभ्रांत परिवारों के वहां बच्चे नहीं, गरीबों के थे, वो भी बच्चे वो थे जो किसी काम के नहीं थे, आवारा, जिनका बिल्कुल विपरीत बुद्धि चलती थी। ऐसे गुरुकुल का प्रधानाचार्य था मैं। आप सोचो, तो मैंने सोचा कहां तूने अपना जीवन खराब करने का एक रास्ता बनाया, ये तो कुछ काम ठीक ठाक नहीं है, जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं वहां की जो मैनेजमेंट थी उसको कहा कि भाई मैं लंबा समय यहां काम नहीं कर सकता, अपने इस गुरुकुल को संभालो और मैं कहीं दूसरी जगह अपना रास्ता बनाऊंगा। लेकिन वहां की मैनेजमेंट में बड़े प्रबुद्ध लोग थे। वहां हमारे प्रधान जो प्रेसिडेंट थे वो आईपीएस अधिकारी थे, एक वहां के मुख्य अधिष्ठाता थे वो भी रिटायर्ड आईपीएस थे, और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे को कहा छोटी सी अवस्था में, 21 साल की उम्र कितनी होती है आप समझते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप बाहर मत जाओ, हम बड़े हैं, उम्र के भी हैं, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि बने बनायों को तो दुनिया बना लेती है, बनाना तो उनका है जो किसी काम के नहीं है। ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। और उनमें एक हंसराज कपूर करके रिटायर्ड एसपी थे, पुलिस अधीक्षक, और वो कितने ऊंचे जीवन के हो सकते हैं इस बात का प्रमाण है कि जिस दिन वो हिसार से रिटायर्ड हुए, उनके बैंक खाते में 6 रुपए 50 पैसे थे। इतना ईमानदार आदमी थे वो, पुलिस के अधीक्षक थे। 6 रुपए 50 पैसे बैंक बैलेंस था उस जमाने में। आजकल तो खाता ही बंद कर देते हैं जिसपे इतने पैसे होते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जमाना था। तो इतने बढ़िया लोगों ने और मेरे को ये बात कही, तो मैंने एक संकल्प लिया, नहीं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहां काम करेंगे और इस गुरुकुल की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेंगे। भाई और बहनों, आप शिक्षक हैं, मेरे परिवार के लोग, काम किया जाए तो कैसे परिणामदायी हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बात कहते हैं
कि आपदा को अवसर में बदलना सीखो। आपने पढ़ा ना, भुज में उनके रहते हुए भूकंप आया था, विनाश लीला हुई थी, और उन्होंने उस विपदा को अवसर में बदल करके भुज को आज सिरमौर बना दिया, देश प्रांत का सिरमौर बना दिया। तो मैंने एक संकल्प लिया कि अब प्रयास करके देखते हैं ईमानदारी से क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है। और परिणाम उन्हीं बच्चों में से मैंने बच्चों को खेल जगत में आगे बढ़ाया, पढ़ाई में उनके साथ मेहनत करवाई। 60-70 बच्चे। आपको एक घटना में बड़ी रोचक सुनाता हूं, बोर तो नहीं हो रहे? मैं प्रैक्टिकल अपने परिवार में बात कर लेता हूं मुख्यमंत्री जी। आप पे अगला कार्यक्रम तो नहीं कोई जल्दी आज? इन पे बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं इसलिए सुनाता हूं कि आज मैं बैठे सोच रहा था मैं आज क्या बात करूं, लेकिन खड़े होकर ये अपने आप आनी शुरू हो गई। जो अपने आप आती वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। हाँ, आपको आश्चर्य की बात बताता हूं। मैं क्या करता था, दिन में तो बच्चे पढ़ाता, रात को मैं एक भजन मंडली लेता था। भजन पार्टी होती ना गांव में, उस समय टीवी का इसका प्रचलन नहीं था, कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे लोगों पे। तो जब रात को वो भजन पार्टी जाती, ढोल बाजे बजाती, तो लोग गांव के मनोरंजन के लिए इकट्ठे हो जाते, महिला पुरुष आते थे, और अच्छी अच्छी बात उनको वो भजनोपदेशक, आर्य समाज के भजनोपदेशक थे, वो बहुत अच्छे सुधारवादी गीत सुनाते, शराब के विरुद्ध का, कुरीतियों के खिलाफ, नारी शिक्षा के लिए, ऐसे बढ़िया बातचीत वहां होती। तो रात को लोग इकट्ठे होते, उनके बीच में फिर मैं लोगों को प्रेरित करता था, भाई आप अपने जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपके काबू में नहीं हैं, वो मेरे को दे दो, मैं उनको ठीक करूंगा गुरुकुल में, मैं उनको पढ़ाऊंगा और बढ़िया आदमी बनाऊंगा। यूं मांग मांग के गांव से शहर का आदमी कोई बच्चे मेरे पास नहीं देता था, जितने थे वो भी गांव के थे, अनपढ़ माता पिता के बच्चे। तो एक बालू बाता नाम का गांव है कैथल के पास, उस समय वो कुरुक्षेत्र जिले में था, हरियाणा में। उस बालक के उस गांव में जब मैंने कार्यक्रम खत्म हो गया, तो मेरे से भी लंबा एक राजपूत जाति का व्यक्ति आया, और उसने मेरे को कहा, वो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ किसान था, उसकी भाषा भी वैसी थी। मेरे को कहने लगा कि भाई तू, मेरे को बोला तू, अपने लड़के को पकड़े खड़ा, वो भी बड़ा लंबा था, मजबूत बच्चा था, तू इसको पढ़ा लेगा? मेरे को बोला तू इसको पढ़ा देगा? मैं कहां पढ़ा दूंगा। मैंने कहा कितना पढ़ा तो है ही नहीं, अब तक तो ये पशु चराता है, ये तो पाली का काम करता, गाय भैंस चरा के लाता, तू इसको पढ़ा देगा? अब मेरे को तो बालक चाहिए थे, कोई भेजता नहीं था। मैं कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा, तो मैं कल ले आऊं इसको? मैं कहा ले आ। तो जी वो कल सवेरे ले आया। मैंने उसकी आयु पूछी, आयु के हिसाब से वो 5वीं क्लास में होना चाहिए था, लेकिन स्कूल में गया ही नहीं वो। लेकिन मैंने उस बच्चे को लिया। ऐसे ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते थे। इससे बदतर स्थिति तो सरकारी स्कूलों की भी नहीं हो सकती जो मेरे स्कूल की थी, क्यों साहब? तो ऐसी स्थिति में अब इस बच्चे का नाम मेरे को आज तक याद है, शक्ति सिंह उस बच्चे का नाम था, और शक्तिशाली था वो, क्योंकि वो तो दूध पीता था, भैंस चराता था, पढ़ाई तो थी नहीं, पिता लंबा चौड़ा, वो भी लंबा चौड़ा। तो मैंने अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्या किया, वहां धरती में एक अखाड़ा बनवा दिया रेसलिंग का, कुश्ती का, बच्चों के लिए कुछ खेल की व्यवस्थाएं भी कराई, और सरकारी खेल डिपार्टमेंट में कोच होते थे सरकार के। वहां गुरुकुल में एक कोच को मैंने फ्री में रहने के लिए एक क्वार्टर दे दिया।
मैंने कहा भी पैसे मैं तेरे से लूंगा नहीं, फ्री में रहो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ समय आप कुश्ती की ट्रेनिंग दिया करो। उसका नाम था प्रकाश दहिया कोच का। और मैंने अखाड़े में उन बच्चों की जो मानसिकता थी, वो गांव के थे, मजबूत थे, मैं कहा इनके ध्यान को तूने बांटना जरूरी है, इनका मन भी लगे और ये इस दिशा में बढ़े। तो कुश्ती में वो बच्चे इतनी स्पीड से आगे बढ़े, इतनी गति से बढ़े। एक बच्चे का नाम सुरेंद्र सिंह, एक का नाम शक्ति सिंह। वो बच्चे बढ़ते बढ़ते जिला स्तर पर नंबर 1 पे आए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे आए, फिर वो स्टेट में टॉप कर गए। और बढ़ते हुए इधर मैंने उनकी पढ़ाई शुरू की और उस बच्चे को हमने 1 साल में डबल क्लास पास करवाई और 10वीं क्लास तक मैंने उसकी आयु पूरी कर दी। उसकी आयु होगी पूरी, नंबर तो आए उसके बेचारे के 55% ही 10वीं क्लास में, 55%। लेकिन कुश्ती में उसने अपने वेट में इंडिया लेवल पर गोल्ड मेडल जीता। और ऐसे 2 बच्चों ने जीता उसी अखाड़े में से तैयार होके, उन्हीं बच्चों में से। और फिर एक घटना हुई, पंजाब में उन दिनों उग्रवाद फैला हुआ था और वहां के डीजीपी थे केपीएस गिल, नाम सुना होगा आपने, बड़े प्रसिद्ध थे। उन्होंने फिल्लोर में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब पुलिस का, उसमें उन्होंने ओपन कुश्ती प्रतियोगिता रखी। ओपन, कोई भी आए, फ्री स्टाइल। और उसमें पुलिस के भी जवान थे। मैंने भी अपने 2 पहलवान भेजे, सुरेंद्र और ये शक्ति सिंह। और आपको आश्चर्य होगा, ये 3 दिन वहां प्रतियोगिता चली। मेरे दोनों बच्चे जीतते जीतते फाइनल में चले गए, ये दोनों बच्चे। और जो लास्ट कुश्ती होनी थी वो केपीएस गिल मुख्य अतिथि बनाए गए, उनके सामने होनी थी। और उस लास्ट कुश्ती में पंजाब पुलिस के 2 पहलवान और 2 मेरे वाले। अब उनकी कुश्ती हुई, मैं भी वहां था। तो मेरे दोनों पहलवानों ने पंजाब पुलिस के पहलवान गिरा दिया। और केपीएस गिल इतना खुश हुआ कि इन दोनों को ऊपर ले आओ, मंच पे लाके दोनों को एएसआई डायरेक्ट सिलेक्ट कर दिया वहां पर, ठीक लगा। अब वो पाली पशु चराने वाले दोनों बच्चे सिलेक्ट हो गए। इस समय वो 10वीं पास, दोनों पंजाब पुलिस में डीएसपी हैं। तो ये एक घटना है, ये बहुत घटनाएं मेरे साथ हुई। और धीरे धीरे मैंने पढ़ाई में शुरू किया। वहां हरियाणा बोर्ड से मैंने फिर उसको जोड़ा, हरियाणा बोर्ड से फिर मैंने सीबीएसई बोर्ड में उसको जोड़ा। इधर मैंने भवन शुरू कर दिए, उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई। और लाइन कितनी लगी आप अनुमान लगा सकते हैं, लंबी बात न करता हुआ। जिस स्कूल में बच्चे प्रवेश के लिए मैं घर घर बच्चों को मांग के लाता था, उसी गुरुकुल में इस साल 9,500 बच्चे मेरे को जरूरत थी 250 बच्चों की, मेरे को आवश्यकता थी 250 बच्चों की। उसके लिए 9,500 बच्चे पूरे भारतवर्ष से परीक्षा में बैठे हैं इस साल। और ये पिछले 15 साल से कार्यक्रम चल रहा है। इस समय उसी गुरुकुल में 1,500 बच्चे। और इस समय तक, इसी साल, पिछले साल मेरे 9 बच्चे एनडीए में गए, 7 बच्चे आईआईटी में गए, 2 बच्चे पीएमटी में गए। और एनआईटीज में तो लाइन लगती है वहां पे। और परीक्षा परिणाम क्या है, 250 बच्चे 12वीं क्लास में थे। उन 250 बच्चों में से 100
160 बच्चे 90 से अब ऊपर नंबर लेते हैं और बाकी टोटल मेरिट में होते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकेंडरी मेरिट। ये सभी का काम है और उसका परिणाम पता क्या हुआ? वो तो एक गुरुकुल था जो मैंने संभाला। अब लोगों ने मेरे पीछे जोर लगाया कि अब हम कहां लेके जाएं अपने बच्चों को। हम तो 9-9 हजार बच्चे लेके आते हैं, अब 200-250 ले लेते, बाकी कहां जाएं? आप और गुरुकुल बनाओ। अब इन पिछले 8 साल में मैंने तीसरा गुरुकुल और बनने, 3 गुरुकुल इससे अलग बनाए और फिर बहन बेटियों ने हड़ताल कर दी। अपने भाइयों को राखी बांधने आती थी ना बहनें, वो कहती आप पक्षपात करते हैं हमारे साथ, आप बेटों के तो गुरुकुल बनाते, बेटियों के क्यों नहीं बनाते? तो लड़कियों ने जब कहा तो मैंने फिर बेटियों का अंबाला में गुरुकुल कब बनाया? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था और उस दिन मैंने इनका भाषण सुना, प्रधानमंत्री जी का। कुरुक्षेत्र और पानीपत की दूरी 1.5 घंटे की, 1.5 घंटा गुरुकुल में जा रहा था मैं सुन के इनका भाषण। रास्ते में मैंने संकल्प लिया कि आज इस भाषण को व्यर्थ नहीं जाने देना, बेटियों के लिए गुरुकुल बनाना है। और अंबाला में हमने बेटियों का गुरुकुल बनाया जिसमें ओनली 4 गर्ल्स हैं। वो बेटियां भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सब क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। तो मैं ये घटना केवल जस्ट इसलिए आपके बीच में सुनाई कि अध्यापक एक जलता हुआ चिराग है, काश वो अपने आप को पहचानते। भाई और बहनों, कितना ही घनघोर अंधेरा हो, कितना ही घनघोर अंधेरा हो, प्रकाश की एक लौ उसको चीर करके प्रकाश में बदल देती। अध्यापक वो चिराग है जो अंधेरे में तड़पती मानवता को नई ज्योति प्रदान कर सकता है। जिस गुरुकुल की चर्चा मैंने की है, जिसमें कोई बच्चे भेजता नहीं था, कोई व्यवस्था वहां नहीं थी, अब उस व्यवस्था को दिखाने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और शिक्षा मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं। मैं आग्रह इनसे कर रहा हूं कि इस 14 और 15 तारीख में मैंने देख लिया आप लोगों पे समय है, वो दिन खाली है। मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं वहां पे, आपको देख के फिर मेरी को कहने की चर्चा नहीं, मेरे अध्यापक वर्ग को एक दिशा वहां से मिले। आप देखेंगे मैंने वहां एक गौशाला बनाई उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए। वहां मैंने नस्ल सुधार का काम किया। मैंने 10-10 किलो दूध की 3 गायें खरीदी और बाकी गाय मैंने लाला सेठ लोगों से दान में इकट्ठी की बच्चों के लिए। और मैंने 10-12 गाय वहां बच्चों के लिए की थी। उस समय बच्चे भी 60-70-100 थे। इधर तो मैंने बच्चों की नस्ल सुधार का काम किया और इधर मैंने गाय की नस्ल सुधार का काम किया। मैंने 10 किलो दूध की गाय से 45 लीटर पर डे दूध पैदा करने वाली गाय पैदा की और आपको मैं दिखाऊंगा 45-50 लीटर पर डे दूध देने वाली गाय मैंने वहां पैदा की। और प्राकृतिक कृषि 200 एकड़ का लगभग हमारा फार्म है जिसमें मैंने जहर मुक्त खेती, 1 बूंद यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड में यूज नहीं करता, केवल गो आधारित खेती है और रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा फसल पैदा करता हूं। यानी कि उनसे पानी 50% कम लगाता हूं। जिस किसान का खर्चा 1 एकड़ में वो रासायनिक 15,000 प्रति एकड़ खर्च करता है, मैं 1,000 रुपए प्रति एकड़ करता हूं। वो 100% पानी यूज करता है,
मैं 50% पानी यूज करता हूं। वो उत्पादन करके लोगों को कैंसर करके अस्पताल में भेजते हैं, और मैं अनाज जो उत्पादन करता हूं से लोग स्वस्थ होकर के राष्ट्र समाज परिवार की उन्नति का काम करते हैं। वो खेती, वहां की गौशाला, वहां के घोड़े, वहां के बालक, आप देखेंगे इस समय कोई गेम ऐसा नहीं जहां वो कीर्तिमान न बनाते हो। हमारे मेरे एडीसी साहब खड़े, ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, छोटी सी अवस्था में नेवी में, ये गुरुकुल में जाते हैं। ये खुद कहते हैं कि हमारी फौज में वो चीज नहीं जो आपने यहां पैदा की। वहां आईआईटी, पीएमटी, एनडीए के लिए अंदर ही कोचिंग सेंटर मैंने बनाए, अंदर ही फैकल्टी, अंदर ही स्टाफ टीचर है। सवेरे बच्चे 4 बजे उठते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं। यानी कि भारतीय जीवन मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा, और उस शिक्षा में भी कीर्तिमान जहां जाते उनका कोई सानी नहीं। तो क्या से क्या पैदा किया जा सकता है? एक आदमी की सोच यदि दिशा बदले। आज यही स्थिति भारत देश की है। एक व्यक्ति की सोच, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपकी इस गुजरात की धरती नहीं तो उनको पैदा किया, और कहां पैदा किया ये भी आप जानते। इतना अभाव, इतनी गरीबी, चाय बेचने तक की नौबत, कितना संघर्ष इनकी मां करती है, परिवार करता है। लेकिन आदमी की विल पावर, इच्छा शक्ति हो तो वो व्यक्ति उन परिस्थितियों को चीरता हुआ भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री भी है वो नहीं, आज दुनिया के 200 देशों में नंबर 1 का प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। ये इच्छा शक्ति तो है। आप और मैं जिस परिवार के लोग हैं, अध्यापक में वो क्षमता है कि जो एक मिट्टी को कुंदन बना सकता है, पता नहीं कहां से हीरे चुन करके राष्ट्र को दे सकता है। काश हम समर्पण भाव से काम करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसका रचयिता यास्काचार्य, उनसे पूछा कि एक बालक का, नहीं ये उसका ग्रंथ है नहीं, शतपथ ब्राह्मण का है, उसमें लिखा है महाराज याज्ञवल्क्य ने कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा, के बालक के 3 गुरु होते हैं। पहली मां, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य, जिसको हम शिक्षक बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं। भारत की प्राचीन भाषा में उसका नाम आचार्य था। मैं यूं ही आचार्य इसलिए लिखता हूं कि मैं शिक्षक हूं, मैं गर्व मानता हूं। और आचार्य शब्द का अर्थ क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। आप सभी आचार्य हैं यहां जो बैठे हैं, आपका अर्थ क्या है आचार्य का? यास से पूछा आचार्य कस्मात, आचार्य कौन है? तो उसका उत्तर वो देते हैं, आचारम ग्रह्यतीति आचार्य, कि जो अपने शिष्य को ग्रहण करके उस शिष्य के निर्माण का ठेका लेता है, जिम्मेदारी लेता है, उसका नाम आचार्य है। जो अपने शिष्य को स्वीकार करके पूरे विश्वास के साथ कहता है बालक के माता पिता को, अब आपके बालक को मैं कैसे संभाल करके रखूंगा। इस देश में गुरु शिष्य परंपरा के लिए वेदों में जो उपदेश है वो अनुपम है। दुनिया के इतिहास में उदाहरण मिल ही नहीं सकता कि शिक्षा क्षेत्र में इतनी ऊंची कल्पना की गई। क्या कल्पना थी? जब गुरु के पास माता पिता बच्चे को छोड़ने आते थे तो इस देश का गुरु बालक को स्वीकार करते हुए कहता था कि आप मेरे में विश्वास कर रहे हो
तो मैं आपके बच्चे को पता कैसे संभाल के रखूंगा? आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, कि मैं आपके बेटे को ऐसे संभाल करके रखूंगा, उसको पालूंगा पोसूंगा, उसको राष्ट्र समाज का उत्तम प्रतिनिधि बनाऊंगा और ऐसे संभाल के रखूंगा जैसे मां के गर्भ में शिशु संभल करके रहता है। ये उपमा है वहां पर वेद क्या था। इससे बड़ी कल्पना दुनिया में नहीं हो सकती। आप सब जानते हैं, जब बालक मां के पेट में होता है तो वो चलता नहीं, मां के चलने में चलना हो जाता है। वो भोजन नहीं खाता, मां के भोजन में उसका भोजन हो जाता है। वो पीता नहीं, मां के पीने में उसका पीना हो जाता है। मां और गर्भस्थ शिशु का जितना गहरा संबंध है, ऐसा गहरा संबंध जब गुरु और शिष्य का होता है, धर्म के पिता और पुत्र के रूप में होता है, तो वहां पर मानव का निर्माण होगा ही होगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बंधुओं, लंबी बात न करता हुआ एक ही निवेदन आपसे मैं करता हूं। देखो, दुनिया में सबसे कठिन काम मानव का निर्माण है। सबसे कठिन काम मानव का निर्माण है, लेकिन सबसे जरूरी काम भी मानव का निर्माण का काम है। यदि मनुष्य का निर्माण नहीं हुआ और हमने सब कुछ बना दिया तो कुछ नहीं बनाया। आज धरती पर असली आवश्यकता इंसान की। आज इंसान दिखाई नहीं देते, चलती फिरती लाशें दिखाई देती। मनुष्य वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने आंखों से निकाल पाए, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके, जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख बना सके। यदि ऐसी सोच के लोग हम नहीं पैदा कर पाए तो वो लोग उस पत्थर के समान हैं जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। ये काम यदि कोई कर सकता तो वो हम कर सकते हैं। भाई और बहनों, असली काम मानव निर्माण, और मानव प्रकृति की दृष्टि से बिल्कुल विपरीत चलता है। उसकी दिशा को बदलना कितनी मेहनत का काम है। ध्यान करो, दुनिया में एक भी स्कूल नहीं है किस चीज का जहां द्वार पर लिखा हो कि यहां पर बहुत बढ़िया चोर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है दुनिया में कोई स्कूल? बोलो भाई लोगों, कोई स्कूल दुनिया में, दुनिया की बात करता हूं, भारत की नहीं, सारी दुनिया में कोई ऐसा स्कूल है कि यहां बहुत बढ़िया तरीके से झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद भी न चोर बनाने की ट्रेनिंग, न झूठ बोलने की ट्रेनिंग, लेकिन चोरी करने से कोई बाजी नहीं आता, झूठ का मौका मिले तो नहीं चूकता। ये सब क्या है? ये नेगेटिव प्रवृत्तियां मानव का एक दोष है। और ये केवल मनुष्य में नहीं, प्रकृति में भी नियम काम करता है। किसान खेत को साफ सुथरा करता है, जुताई करता है, बार बार उसका वीड्स निकालता है, लेकिन हम देखते क्या है कि किसान खेत में बीज बो करके आता है। वो बीज तो बाद में जमता है, निंदामण पहले ही जम लेता है, जिसको बुलाता ही नहीं कोई। वो अपने आप जमते हो, बोने नहीं पड़ते, अपने आप आते। जैसे वहां वो गंदगी अपने आप आती, मानव में भी स्वाभाविक ये कुवृत्तियां हैं जो उसको पतन की ओर ले जाती हैं। अध्यापक वो महान चिराग है जो ऐसी अवस्था में उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों को सकारात्मक में बदल दे। इसी में मानव का निर्माण होता है। और जिस मानव का निर्माण आपने कर दिया तो सारे समाज का निर्माण उससे होता है। विचार की शक्ति दुनिया में सबसे बलवती है, इससे बड़ी कोई नहीं।
यदि विचार आदमी का उठता तो मनुष्य महान बन जाता है, और विचार गिरता तो मनुष्य के पतन की भी कोई सीमा नहीं। और इस काम की जिम्मेदारी यदि सौभाग्य से मिली है तो वो आप और मेरे को मिली। आप और मेरे में वो क्षमता है कि एक बालक को हम किस रूप में मोड़ पाते हैं। और बालक भाषण से नहीं सीखता, ये ध्यान करना। बालक भाषण से नहीं सीखता। 35 वर्ष तक मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। मेरा विद्यालय रेजिडेंशियल 4 गुरुकुल इस समय चलते हैं, जिनमें 5000 बेटे बेटियां पढ़ते हैं। और उन बच्चों में मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। किन बच्चों की रुचियां किस रूप में कैसे बढ़ती, उनके माता पिता पे भी मैंने रिसर्च किया, वो किस प्रवृत्ति के, उनके बालक किस प्रवृत्ति के। इसको मोड़ा कैसे जा सकता है? ये मोड़ा जा सकता संस्कारों के द्वारा, विचारों के द्वारा, बार बार उनको अच्छे महापुरुषों की जीवनी के द्वारा। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, जब भी खाली समय में आप भी अपने स्कूल्स में, लाइब्रेरी में महापुरुषों की छोटी छोटी जीवनियां जरूर रखें। खाली समय मिलता आप भी स्वयं पढ़ें। जब भी समय मिलता क्लासरूम में उन बच्चों को बताएं। जब किन्हीं की कहानियां बच्चों को बताई जाती जीवन की, तो बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं और उसको सीख पाते हैं। उन चीजों के द्वारा मैं और आप भी अपना आचरण ठीक रखें। बालक से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है, हम सबको जानता वो। कभी आप ये सोचो कि घर वालों ने जो नाम रखे वही हमारे हैं, वो नहीं है, उनके द्वारा भी रखे हुए हैं। हाँ या ना? क्यों साहब? ये सब जानते हैं जी, सही क्यों साहब? है कि नहीं? एक नाम तो माता पिता ने हमारा रखा है और एक शिष्यों ने भी रख रखा है, और वो नाम बिल्कुल कतई आपके व्यवहार के अनुरूप रखते हैं। घर वालों ने तो पैदा हुए थे तब रखे थे, पता ही नहीं था हम कैसे होंगे। ये बालक इतने चालाक हैं, जो जिस प्रवृत्ति का वही नाम उसका नया बहेगा। और वो ये देखता गुरुजी उठता कैसे है, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, आप स्टाफ रूम में बैठ करके क्या बातें करते हैं, एक एक रिपोर्ट उन पे होती है। आप ये मत समझो उनको कुछ नहीं पता, उनको हमसे ज्यादा पता है। क्यों पता है? ये मैंने पढ़ा, मनोविज्ञान को मैंने बड़ी गंभीरता से पढ़ा। मैंने फ्रायड को बहुत अध्ययन मैंने किया, बाल मनोविज्ञान को मैंने अध्ययन किया। बच्चे को कितनी उसकी कैचिंग पावर इतनी हमारी है ही नहीं। हमारे तो इस दिमाग में बहुत सवाल निकले हुए। और उन्होंने क्रो नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने लिखा है कि आप समान धरती पे, सुनो ध्यान से, इस धरती पे आप 2 गड्ढे बनाओ, 2 गड्ढे बनाओ, और एक गड्ढे को पानी से भर दो, दूसरे को खाली रख दो, और दोनों के बीच में पानी डालो। बताओ भरे हुए गड्ढे में जाएगा, खाली में जाएगा? बोलो भाई लोगों, खाली में जाएगा ना, भरा हुआ तो पहले ही भरा, उसमें पानी कैसे आएगा? तो यही बात तो है हमारे जो दिमाग है ना, हम जितने बैठे हैं, ये तो गड्ढा जो ब्रेन का ने तो भरा पड़ा है विचारों से। किसी ने बेटी की शादी करनी, किसी ने घर बनाना, किसी ने रिश्तेदारी का सहयोग करना, किसी ने वो काम करना। अब ये तो भरा हुआ गड्ढा मेरा आपका, और बालक का जो मस्तिष्क है वो खाली गड्ढा है। विचार जब चलता है तो एकदम कैच करता उसको, वो खाली कागज है। अच्छा, आपने नहीं देखा, आप में से जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट टीचर है, आप उसको पकड़ो, जिसने पीएचडी कर रखी है, बुक्स भी लिख रखी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम में बैठे हैं कई लोग। आप ऐसे विद्वान अध्यापक को लो, और एक आप 2.5 साल के बच्चे को लो,
दोनों को ऐसे देश में भेज दो जहां की भाषा को दोनों ही न जानते हो। अब बताओ वहां की भाषा को पहले कौन सीखेगा? बोलो जी, बच्चा क्यों सीखेगा? ये तो इतने बड़े पीएचडी साहब हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आयु 40 साल है, बुद्धि भी विकसित है, और 2.5 साल के बच्चे को आप कह रहे वो पहले सीखेगा, उसमें तो बुद्धि भी विकसित नहीं। समझ गए कि नहीं? ये है खेल, इसको हम भूल जाते हैं। और ऐसे छोटे बच्चों के सामने घरों में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, यूं समझ के इसको कुछ भी नहीं पता, और ये नहीं समझते उसको आपसे भी ज्यादा पता है। एक एक चीज उसके ब्रेन में जाकर के जगह बनाती है। इसलिए मेरा आपका उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार वो उस बच्चे के जीवन के निर्माण और पतन का कारण बनता है। यदि हम जिम्मेदार हैं तो बालक जिम्मेदार बनेगा, हम जिम्मेदार नहीं है तो हम देश को कुछ नहीं दे पा रहे, ये पाप मुझे लगेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे बढ़िया पवित्र कर्म किसी का नहीं। अध्यापक सर्वश्रेष्ठ है, अध्यापक सिरमौर है। जैसे शरीर में गर्दन का हिस्सा ऊपर वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वैसे समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वो अध्यापक का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। मैं और आप यदि जिम्मेदारी पूर्वक बालक के निर्माण में समय लगाएं, शारीरिक रूप से बलवान बनाएं, वैचारिक रूप से उसको प्रबुद्ध बनाएं और शैक्षिक रूप से उसको योग्य बना दें, तो इससे परिवार भी बनेंगे, समाज भी बनेगा, देश भी बनेगा, और आप अपने कर्तव्य में सफल होंगे तो आत्मबल आपको भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः शिक्षक दिवस पर इस आशा के साथ कि हम जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, वो राष्ट्र निर्माण वाले, ये भावना बच्चों में जानी चाहिए। आप आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर बालकों का निर्माण की ओर बढ़ो, एक स्वावलंबी बनने का। ये जो गुलामी की मानसिकता, हजारों साल की गुलामी की मानसिकता हमारे अंदर बैठी है, इसको निकालने में और बालकों को स्वदेशी विचार, स्वदेशी चिंतन, राष्ट्र प्रेम, ये भाव हमने बालकों में देना चाहिए। हम स्वयं भी अपने घरों में एक निर्णय लें, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, जिससे मेरा देश आत्मनिर्भर बने और विश्व गुरु हम बने। आज वो समय अनुकूल बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मेहनत के साथ इस देश की दिशा बदली है, अब दुनिया को दिखाई देता है बड़ी बड़ी ताकतें भारत के सामने सिर झुकाए खड़ी हैं। अब हमारा रास्ता प्रशस्ति की ओर है। हम सारे मिलकर इस मिशन में सहयोग करें तो बहुत बड़ा काम करके आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत दे करके हम जाएंगे। और इसमें मेरे अध्यापक भाई बहनों का योगदान सर्वोपरि माना जाएगा। इस अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गुजरात श्रीमान आचार्य देवव्रत जी। आध्यात्मिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और प्रात्यगिक शिक्षा का जो समन्वय आपके प्रसंगोचित प्रवचन में दिखाई दिया, पुनः तालियों के हर्षनाद के साथ आभार व्यक्त करते हैं। અને હવે આજ